चलो बच्चा लोग, लास्ट लेक्चर बड़ा वी हैव स्टार्टेड studying about the term implicit function. And बच्चा लोग, when we have started studying about the term implicit function, so beta what we have studied beta about the implicit function, a function which is involving both the variables, function which is involving both the variables together. That type of functions they are based all to be as implicit function. And what is the general form of the implicit function? General form, चलो मुझे reply करो बच्चा लोग. What is the general form of the implicit function is f of xy is equal to 0. F of xy is equal to 0. Such type of functions they are being called to be as implicit functions. बड़ा हम लोग ने जब सम के स्टेप्स बड़ा जब डिस्कस किए थे तो उसमें मैंने क्या बताया था, if we want to solve the sums which are based upon the implicit function, so you will start solving the sum by differentiating both the sides with respect to x. Next step, applying the operator d by dx on both the sides है ना. And after carrying out the differentiation, मैंने क्या बोला था बेटा, in the given sum बेटा you may obtain at least one term which is comprising of dy upon dx. बोला था बेटा मैंने ऐसा, there will be at least बेटा one term which is comprising of dy upon dx. चलो छोकरा वो सब लोग बेटा मुझे फटाफट आंसर आपो. What is the meaning of the term बेटा at least one term? At least one term means बेटा there will be minimum one or more than one term containing dy upon dx बराबर है. अच्छा, but are we interested बेटा in more than one term containing dy upon dx? बट हम लोग एक dy upon dx को बड़ा संभाल नहीं सकते हैं, तो क्या हम लोग बड़ा यहाँ पे दो दो dy upon dx, तीन तीन dy upon dx को बड़ा संभाल पाएंगे क्या? नहीं. तो मैंने क्या बोला था, what is the rule कि all the terms which are containing बड़ा dy upon dx, but it should be transferred to which side? Left. जिसके पास dy upon dx से बड़ा वो सारे टर्म्स कहाँ पे आने चाहिए? लेफ्ट हैंड साइड. और जिसके पास बड़ा dy upon dx वाले टर्म नहीं है वो सब कहाँ पे आने चाहिए? राइट हैंड साइड. अच्छा बेटा, लेफ्ट हैंड साइड में से तुम्हें चाहे कोई भी कॉमन टर्म मिले या ना मिले, बट तुम्हें हमेशा बड़ा कॉमन टर्म क्या मिलेगा? dy upon dx बड़ा हमेशा तुम्हें कॉमन टर्म मिलेगा ही. बट राइट हैंड साइड का बड़ा अपना कोई गारंटी नहीं है. राइट हैंड साइड का बड़ा अपने कोई गारंटी नहीं है ना. कॉमन टर्म बड़ा मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला. समझा? लेफ्ट हैंड साइड वाला जो टर्म है बड़ा वो मेड इन इंडिया टर्म है. राइट हैंड साइड वाला जो टर्म है बड़ा वो मेड इन चाइना टर्म है. उसका कोई गारंटी नहीं है. आंसर जो मिलेगा बड़ा तो dy अपॉन dx इंटू समथिंग का आंसर होगा. बट बड़ा देखो, dy अपॉन dx इंटू समथिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है. वी आर इंटरेस्टेड ओनली इन dy अपॉन dx. तो बड़ा dy अपॉन dx के साथ जो टर्म मल्टीप्लाई हो रहा है वही टर्म बड़ा राइट हैंड साइड में आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा. बड़ा अगर सम सिंप्लीफाई हो सकता है तो करने का, अगर सिंप्लीफाई नहीं हुआ तो नहीं करने का.
exercise number बड़ा 3.4 which is on page number 95. Find dy upon dx if find dy upon dx बड़ा if starting first root x plus root y is root x plus बड़ा root y which is equal to बड़ा root a. So बड़ा start root x plus root y is equal to बड़ा root a. But a function is involving both the variables x and y together, and since but it is involving both the variables together, therefore it is an example of implicit function. To start solving the sum as differentiating both the sides with respect to x, applying the operator d by dx on both the sides. Therefore, d by dx of root x plus root y which is equal to d by dx of root a. चलो बेटा start left hand side बेटा inside the bracket there are total how many terms? Two terms. We need to apply the operator to both the terms. So you'll get the answer as a d by dx of root x plus root y which is equal to अब ये देख बेटा यहाँ पे बड़ा here we know that what is a is a constant बेटा but if a is a constant so we know that बेटा root a is also a constant बेटा root a is a constant so we know that derivative of बेटा root a answer will be equal to 0. And now everyone better use the formula derivative of root x. Answer is 1/2 root x बराबर है plus root y. But चलो root y it is in the form of root x and we know that a derivative of root x is 1/2 root x. बड़ा ये फॉर्मूला था किसके लिए? x के लिए और यूज किया बड़ा किसके लिए? y के लिए. तो मैं तो बोल रहा हूँ बड़ा करो कोई प्रॉब्लम नहीं है भरना पड़ेगा पेनल्टी इनटू
dy dx of y. पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी एमबीए एंट्रेंस, SYJC कॉम, TYB कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट Of तैयारी y, का साथी। which is equal to 0। चल भाई फटाफट आंसर दे यहाँ पे फटाफट। therefore 1/2 root x plus 1/2 root y, derivative of y with respect to x, it will be dy upon dx which is equal to 0। बराबर। अच्छा बेटा, अकॉर्डिंग टू द रूल लेफ्ट हैंड साइड में रहने का परमिशन सिर्फ किसको है? dy upon dx को। बेटा बाकी सारे टर्म्स ऑन a, so you will get the answer as a, 1 upon 2 root y into dy upon dx which is equal to minus 1 upon 2 root x। बराबर। अब यहाँ पे देखो बेटा, the terms like 1 upon 2 and बेटा 1 upon 2 will get कैंसल और मुझे आंसर चाहिए बेटा सिर्फ dy upon dx का। पे यहाँ पे है। बच्चा लोग रूट वाई वाला टर्म लेफ्ट हैंड साइड में इट इज गेटिंग डिवाइड। यही टर्म को अगर मैं ट्रांसफर कर दूं तो इट विल गेट मल्टीप्लाई। therefore dy upon dx which is equal to minus of root y अपॉन रूट एक्स। बराबर। अब ये जो आंसर तुम्हें मिला बेटा, दिस कैन बी वन ऑफ द वे ऑफ राइटिंग योर फाइनल आंसर। अदरवाइज बेटा इन योर स्कूल डेज यू माइट हैव स्टडीड वन ऑफ द प्रॉपर्टी। बेटा प्रॉपर्टी एक पढ़ा होगा तुमने, रूट ए अपॉन बेटा रूट बी which is equal to whole root of a upon b। ऐसा पढ़ा था बेटा हम लोग ने इन स्कूल। वी हैव स्टडीड सच प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे वी कैन राइट दिस फाइनल आंसर एज therefore dy upon dx which is equal to a minus। तो बेटा कौन बताएगा आंसर?
कैन बी द अंडर ऑफ बेटा y अपॉन x। देख लो पूरा सम देख लो बेटा, कोई डाउट है तो पूछो। चलो नेक्स्ट। सम नंबर 2। सम नंबर 2। x क्यूब प्लस y क्यूब x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 4x क्यूब y चलो स्टार्ट। अब चेक कर लो बड़ा यहाँ पे द फंक्शन बड़ा इट इज इन्वॉल्विंग both the variables x and y together but and since it is involving both the variables together but therefore it is an example of a implicit function। चलो बड़ा फर्स्ट differentiating both the sides with respect to x। next step applying the operator d by dx बड़ा on both the sides। left hand side बड़ा there are total 3 terms। we need to apply the operator बड़ा to all the 3 terms। d by dx of x cube plus d by dx of y cube plus बच्चा लोग 4 is a constant, constant की जगह बार into d by dx of x cube y is equal to right hand side 0। 0 is also a constant, derivative of a constant is what 0। चल भाई फटाफट आंसर दे यहाँ पर therefore x cube। बच्चा लोग मुझे बताओ डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब बड़ा आंसर विल बी it is 3 times of beta x square plus derivative of beta y cube it is also in the form of beta x raised to n। इसका आंसर आएगा बड़ा 3y स्क्वायर। फॉर्मूला था x के लिए यूज किया y के लिए भरना पड़ेगा पेनल्टी इनटू d by dx of y प्लस बेटा बिटवीन x क्यूब एंड y। चलो मुझे बताओ बेटा देयर इज द रिलेशन ऑफ multiplication बेटा तो sum will be solved by using a dash rule। So it will become x cube into d by dx of y plus
plus y into d by dx of which is equal to 0. अब यहां से देख फटाफट आंसर आता जाएगा बेटा, therefore 3x square plus plus 3y square into what is the derivative of y with respect to x is? It is dy upon dx plus 4 into x cube. Derivative of y with respect to x. Answer is dy upon dx plus y into. But what is x cube का derivative is 3x square. What is the answer is equal to 0. बराबर. बड़ा before and bracket. चलो मुझे बताओ बड़ा, there is a relation of multiplication. So you will get the answer as 3x square plus uh, 3y square dy upon dx plus open the brackets 4 x cube into